हाय, नमस्ते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 5 मिस्टेक जो हमको अवॉइड करने चाहिए जब हम मॉड्यूलर किचन बनाने का सोच रहे हैं। तो फर्स्टली व्हेनेवर वी आर प्लानिंग अ मॉड्यूलर किचन, फर्स्टली हमको ये याद रखना चाहिए कि हम उसमें क्या कोर मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कोर मटेरियल फॉर अपने किचन के लिए, आई ऑलवेज रिकमेंड BWP ply, that is 710 grade वाला ply, that is boiling water proof 710 grade का ply. Otherwise we can always use HDHMR. तो ये दो जो अपने materials हैं which this thing we can use for our kitchen base units, wall units. इनको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि अगर हमारे साथ कोई भी वाटर प्रॉब्लम हो जाती है, there is any water problem which is happening in our kitchen, those things can be avoided since these are all water resistant ply. Second, when we talk about building our kitchen, next problem आती है कि हमारे काउंटर की हाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि when we are working in the kitchen, our back starts aching or when we are washing our shoulder starts aching. तो वो चीज़ों को, वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हाइट होता है वी हैव टू अडहियर। तो फर्स्ट थंब रूल ये होता है कि मतलब व्हेन वी आर फोल्डिंग आवर एल्बोज, ये वाला जो है 6 to 8 इंचेस गैप होना चाहिए। when you have this kind of a gap, it will help you to not have these basic problems of backache and shoulder problem. तो एक एवरेज इंडियन की हाइट होती है तो एक 5 feet 8 inches. So for those kind of people, I always recommend a height between 32 inches to 33 inches. So this is a very optimal height. So this will not, if you keep these height for this average, अपना जो majority of the people है, this works well. If somebody is very tall, say 5'10", 5'11", in those cases, I recommend between 33 inches to 34 inches वाला काउंटर का हाइट। हमारा इशू ये होता है whenever we are planning our kitchen, कि हमारा ये जो बैक स्प्लैश का हाइट है वो हमें कितना रखना चाहिए, राइट? तो ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि हम 24 इंचेस की हाइट रखें, दैट इज 2 feet. That is a very optimal height which we can keep. Why I suggest this height is, एक तो whenever we are working with big utensils, we will never have a problem if we keep this optimal height. Second benefit ये होता है कि those tiles which comes in the dimension of 4 feet 2 inches, तो ये एक seamless हमको finish दे देता है because of then there is no cut in the tile and एक seamless finish वाला हमारे backsplash finish आ जाता है. थर्ड हम बात करेंगे हमारे wall units के height. So when we are considering a wall unit height, I always recommend कि इनकी height होनी चाहिए 24 inches, right? 24 inches से लेके 2 feet 6 inches. When I say 24 inches, so an average height person can easily access all these units over here, क्योंकि हमको एक हेल्प टूल की या कोई लैडर की जरूरत नहीं पड़ती है. So when we keep a normal height का ये, we can always access behind also. दूसरा, if you are a little taller, then you can opt for 720 mm, that is 2 feet 3 inches तक का भी हम प्लान कर सकते हैं एक वॉल यूनिट, right? So the most critical point when it comes to developing your kitchen, building your kitchen, is the electrical connections. When I'm talking about electrical connections, we have to make sure कि हम ये जो भी है, जैसे हमको number of sockets कितने चाहिए, the purpose of those sockets. When I'm saying the purpose of those sockets, that means कि ये वाले सॉकेट का क्या पर्पस रहेगा? Is it going to be used for OTG? Is it going to be used for microwave? Or it is going to be used for a sandwich maker? So all these details have to be made sure before we place the tile, because इसके बाद ये काम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा. We will have to again break those tiles and install another electrical line. So yes, this is the most critical aspect when you build a kitchen. I hope this video will help you to build your dream kitchen.
Please share this video with anybody whom you know is building their kitchen, or comment below if you have any other queries regarding your home interior. For all your interior related problems, we are the solution. Arham Interiors.